Hello aspirants, welcome back to our original channel, that is Target UPSC, the lead you need. As you know, this channel was hacked on 12th July. In last 2-3 months, various Twitter accounts, YouTube accounts were hacked, and yesterday only PM Modi's Twitter account was also hacked. So this is just to inform you all about what we went through, how we recovered our channel, and what steps everyone should take so that even if they face this crisis, they can recover their channel. To start with, on 12th July, we were going to upload our video at 9:45, and immediately we came to know that we were not able to access our channel. And it was not even in the search engine of YouTube. It was totally terminated. So we were in a panic situation. हमें पता नहीं था हम क्या करें. तो हमने सर्च, हमारा जो गूगल अकाउंट है उसमें देखा कि क्या ऐसे कुछ हमने किस चीज़ पर क्लिक किया है, तो हमें ऐसे कुछ मिला नहीं. एंड वी हैड टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन. तो हम वी वेर टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स बट स्टिल इट वॉज हैक. तो वी केम टू नो थ्रू ऑल द रिसर्च दैट हमारे चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम किसी हैकर ने अबाउट इथीरियम, दैट इज़ अ बिटकॉइन, उन्होंने प्ले किया था लाइव स्ट्रीम. एंड उसने चैनल का नाम भी चेंज करके इथेरियम 2.0 लाइव रखा था. पोस्ट प्लेइंग दिस लाइव स्ट्रीम, दे रिपोर्टेड दिस वीडियो टू यूट्यूब सेइंग दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग फेक एंड मैलिशियस कंटेंट. तो जब उन्होंने लाइव स्ट्रीम पोस्ट किया, दे ऑल्सो साइमल्टेनियसली रिपोर्टेड इट टू यूट्यूब. इस वजह से यूट्यूब की पॉलिसी है, इफ दे फाइंड एनी कंटेंट विच इज़ वायलेटिंग देयर टर्म्स एंड कंडीशन, दे टर्मिनेट देयर चैनल. So without us knowing anything about this, our channel was terminated, and it was like everything came to an end. So suddenly we started calling our friends, and हमें पता चला कि YouTube is very good at responding through Twitter. So हमने एक Twitter trend start किया, and we were very thankful to you for your support. And immediately YouTube ने उस Twitter को reply किया, and they asked us to file a complain and simultaneously appeal to their decision. So we gave them all the evidence, and हमने हमारा appeal file किया around 2-3 दिन बाद. We also filed cyber complaint cyber police में about this hacking incident, and we gave them all the evidence that our account was hacked. Though our Gmail account was not hacked, but our YouTube account was hacked. Post that almost 15 days तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, and we almost lost the hope of recovering the channel. And we were trying to contact the right person, लेकिन कोई lead नहीं मिल रहा था. And we thought of starting a new channel, and we had already given up on that this channel would be recovered. And सब लोग यही बोल रहे थे कि it takes almost 6 to 7 months even if it gets recovered. But suddenly एक दिन उनका मेल आता है, they asked us to give certain details. एंड फिर उसी मेल को हमने रिवर्ट बैक किया, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स थे हमने उनको दिए, एंड दे कंफर्म दैट इट वाज हैक. लेकिन दे टोल्ड अस इट वुड टेक मंथ्स टू रिकवर योर अकाउंट बैक. बट वी रिक्वेस्टेड अगेन, वी टोल्ड देम इट्स एन एजुकेशनल चैनल एंड मेनी एस्पायरेंट्स आर वाचिंग इट सीरियसली, एंड वी गिव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड उनको प्रॉपरली हमने रिक्वेस्ट किया, and they also agreed to us, and they recovered our channel within next 15 to 20 days. But this process is very time taking, time consuming. We could not do anything in the month of July, and we were always and we were tensed about these events, and this took a lot of toll on our mental health also. I just want to tell you, please keep your password secure. Do not share it among anyone. एंड हमें साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस तभी पता चलता है जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है. तो आई वुड लाइक यू टू बी मोर अवेयर, एंड ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं. एज यू नो, पीएम मोदी का अकाउंट, इलॉन मस्क का अकाउंट, बिल गेट्स का अकाउंट, सबके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं. तो वी आर नॉट, हम ऐसे नहीं कि वी आर सिक्योर, एवरी वंस अकाउंट कैन बी हैक. तो मेक श्योर यू आर डबली सिक्योर. आप एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट्स. So this is what we went through. We have started our new channel, that is Target UPSC Udaan. We were posting our 140 plus series and all the videos there. From now onwards, we'll post certain section of videos here and other section there. We'll update you on the content. I just thought of telling you about these events so that anyone who is having problem with respect to their accounts being hacked can take
can take help from us. We'll be sharing our email ID, and if they have any issues, we'll help you from our experience. Thank you.